मजा ही आ जाता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय नया वीडियो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सामराम स्टूडियो। तो दोस्तों कैसे हो आप लोग? आई होप सब बढ़िया है, मस्त है, फिट एंड फाइन। मैं भी ठीक हूँ। तो दोस्तों आज जो वीडियो में मैं रिएक्ट करने वाला हूँ, ये वीडियो का जो टाइटल का नेम है बांग्लादेश द नेक्स्ट राइजिंग स्टार। होप ये वीडियो देख के आपको अच्छा लगे और अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना। और इससे पहले मैंने बहुत सारे वीडियोस में मैंने बांग्लादेश के रिलेटेड वीडियोस में मैंने रिएक्ट किया है, आप जाके देख सकता है। और अगर इस वीडियो को आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना। साथ ही इस वीडियो का जो ओरिजिनल लिंक है आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। वाओ, स्टार्टिंग A land of natural wonders, colorful festivals, and endless possibilities, Bangladesh has a glorious history of resilience and valor. And the essence of this beautiful land can be found in the life and philosophy of one man, our father of the nation, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. Almost 50 years ago, he liberated us from the shackles of oppression, taught us the true meaning of freedom, and envisioned for us a bright, prosperous future. Now, as the whole nation jubilantly celebrates the birth centenary of that greatest Bengali of all time, the future looks brighter than ever for Bangladesh under the prudent leadership of his daughter, Honorable Prime Minister Sheikh Hasina. Thanks to the government's enhanced priority on education, the last decade has seen the literacy rate jumping to 73%. Wow. Enrollment in primary schools has jumped to almost 100%. Besides, 14,000 community clinics have brought healthcare to the rural doorstep, rising the average lifespan of people to almost 73 years. Infant mortality has gone down to 31, while maternal mortality rate is now only 1.72 persons per thousand. For 4 consecutive years, Bangladesh has been at the top of the South Asian countries in ensuring gender equality as per the World Economic Forum ranking. The poverty rate has also decreased from around 40% in 2005 to 20.5% in 2019. In the fiscal year 2018-19, Bangladesh's GDP grew by 8.15%, which is one of the highest in the world. At the same time, per capita income has crossed $2,000 from $759 back in fiscal year 2008-9. Our exports have grown to almost $41 billion from $15 billion 10 years ago. Currently, Bangladesh is the second largest exporter of ready-made garments in the world. Meanwhile, our pharmaceuticals, leather products, food processing, and ICT industry are also making their mark at the global stage. Flow of remittance increased from $9.7 billion a decade ago to $16.5 billion in the fiscal year 2018-19. Flow of foreign direct investment has increased by almost 4 times in the last 10 years to reach $3.6 billion. Private sector investment has simultaneously increased by 5 folds in last 13 years, reaching almost $71 billion. Once dependent on food aid, Bangladesh has not only achieved food self-sufficiency but also emerging as a food exporter. Currently, Bangladesh is the 4th largest producer of rice, 3rd largest producer of vegetables, and the 4th largest producer
of freshwater fish in the world. The power generation capacity has increased by 4.5 times to reach 22,329 megawatts. 94% people in the country now have access to electricity. More than 4,500 Union Digital Centers are bringing digital services to rural doorstep. The total number of mobile phone subscribers has crossed 161 million. Meanwhile, the number of internet users has increased to 96.2 million. After successfully achieving the Millennium Development Goals, Bangladesh is now working relentlessly to attain the Sustainable Development Goals. Bangladesh's unprecedented success is now being recognized by various global entities while earning the country accolades at the world stage. Back in 2015, Bangladesh became a lower middle-income country as per the World Bank classification. Goldman Sachs has identified Bangladesh as one of the next 11 countries that has the potential to become one of the world's largest economies in the 21st century. According to HSBC, Bangladesh is likely to become the 26th largest economy in the world by 2030. Meanwhile, PricewaterhouseCoopers projected that Bangladesh has the potential to become the world's 23rd largest economy by 2050. To boost up such huge economic progress, the government has also initiated various mega infrastructure projects. The country's longest bridge over the Podda River, Dhaka Metro Rail, Pyra Deep Seaport, Bangabandhu Space Satellite, and the country's first nuclear power plant in Rupur. These are just few examples of such mega undertakings. 100 special economic zones will be established across the country in the next 15 years to produce goods and services worth $40 billion and to create 10 million jobs. Meanwhile, 28 high-tech parks will be constructed to bring ICT export to $5 billion by the year 2021, while creating 2 million jobs. To bring all the modern amenities to the rural people, the government is also implementing the gigantic scheme My Village, My Town, a major promise of its latest election manifesto. Bangladesh has a young, energetic population with 34% of its people aged 15 and below, while more than 65% is of working age. Cashing in on that demographic dividend, Bangladesh now aspires to become a major player in the upcoming fourth industrial revolution. To make this country ready for that transformation, the government has put special emphasis on quality education, technology, digitization, youth, and decent job creation in its latest budget, as it is determined to create jobs for 30 million people by the year 2030. Despite all that has been achieved, Bangladesh is not resting. In line with the dreams of our father of the nation, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, we are aiming to become a prosperous, developed nation and one of the top 20 economies in the world by 2041. Come, join us in our journey as we march beyond the dreams to emerge as the world's next rising tiger. The next rising tiger. तो दोस्तों वीडियो देख के बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही इंफॉर्मेटिव था, बहुत कुछ जानने को मिला आज बांग्लादेश के रिलेटेड। तो इस वीडियो को जैसे रिप्रेजेंट किया गया है और जैसे इसने एक्सप्लेन किया है, जस्ट वाओ, इट्स अमेजिंग, आई लाइक दैट। और अगर बात करें वीडियो के अंदर की, एंड टुडे वी गॉट सो मच टू नो ऑफ बांग्लादेश इन डिफरेंट सेक्टर्स। लाइक इसमें दिखाया गया है लाइक अबाउट लिटरेसी रेट,
जो उन लोग का इंक्रीज हो गया है और हो रहा है। लाइक टिल 2019 इट वाज 72% और 73%, और उन लोग का जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट है वो भी इंक्रीज हो रहा है, और एम्प्लॉयमेंट रेट भी इंक्रीज हो रहा है, और इसमें जीडीपी ग्रोथ का बारे में भी बोला गया है, पर कैपिटा इनकम के बारे में भी बोला गया है। और या मतलब मैंने बहुत सारा वीडियोस में मतलब बांग्लादेश से रिलेटेड आई रिएक्टेड। तो लाइक आफ्टर रिएक्टिंग एंड ऑल मतलब देखने के बाद बहुत कुछ जानने को मिला मुझे बांग्लादेश से रिलेटेड, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मिला। बांग्लादेश इज रिगार्डेड एज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रेडीमेड गारमेंट्स इन द वर्ल्ड। वी कैन सी मतलब कहाँ पे है अभी बांग्लादेश। और दे आर ऑल्सो रिगार्डेड एज द फोर्थ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फूड ग्रेन्स एंड फ्रेश वाटर फिश। ग्रेट अचीवमेंट। और साथ ही मुझे आज ये वाला पता चला, दे आर दी समथिंग थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ वेजिटेबल्स। मतलब इतना बड़ा बड़ा अचीवमेंट दे आर गेटिंग इट, जस्ट वाओ, बहुत मजा आया मतलब वीडियो देख के। और अगर लाइक बात करें इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, हाँ उन लोग का जो जीडीपी ग्रोथ है ये सब मतलब इंक्रीज हो रहा है। पर कैपिटा इनकम मतलब 2020 में दे हैव क्रॉस्ड इंडिया इन 2020 पर कैपिटा इनकम। मैंने इसको लेकर भी मैंने मतलब इस वीडियो में भी मैंने रिएक्ट किया है, आप जाके देख सकता है। तो लाइक ओवरऑल बांग्लादेश इज डेवलपिंग। और जो मतलब बांग्लादेश जो मतलब प्रोजेक्ट्स बनाते हैं गवर्नमेंट का, जो मतलब बांग्लादेश का गवर्नमेंट जो प्रोजेक्ट्स बनाते हैं मतलब देखने लायक है। जैसे कि वी कैन टेक एन एग्जांपल ऑफ ये राजू उत्तरा मॉडल टाउन और ये वसुंधरा प्रोजेक्ट्स, मतलब बहुत सारा ऐसा है मतलब लाइक उन लोग का बहुत इम्पैक्ट रहता है डेवलपमेंट के ऊपर, मतलब कंट्री का डेवलपमेंट में। और जो लाइक इवन जो मेगा प्रोजेक्ट्स लेके आता है वो लोग, पद्मा ब्रिज और ये हो गया ढाका हाई स्पीड रेलवे, ये सब मतलब एक पॉजिटिव वाइब्स आता है। इट्स वेरी अमेजिंग, मतलब मज़ा ही आ जाता है वीडियो देख के। मतलब इतना चेंजेस आ गया है बांग्लादेश में। मुझे यार मैं सच बोलूँ यार, मुझे पहले नहीं पता था इतना कुछ बांग्लादेश के बारे में। अभी मतलब मैं जब वीडियो देखना स्टार्ट किया है, आई गॉट सो मच टू नो अबाउट बांग्लादेश। ऑफ कोर्स दे आर ऑल्सो मतलब एजुकेशन में भी, एजुकेशन सेक्टर में भी दे आर ग्रोइंग, इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी दे आर ग्रोइंग, मतलब हर सेक्टर में दे आर ग्रोइंग। एग्रीकल्चर सेक्टर लेके आईटी सेक्टर लेके मतलब, और जो स्टेप्स लेता है गवर्नमेंट बांग्लादेश का बहुत मतलब मज़ेदार होते हैं, मज़ा आ जाता है। एंड दे आर इम्प्लीमेंटिंग इट, दे आर इम्प्लीमेंटिंग इट। तो ओवरऑल या दे आर गोना बी द मतलब क्या बोलूँ, यस द राइजिंग टाइगर। तो दोस्तों आज का वीडियो था इतना ही। अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना, साथ ही अगर चैनल पे आप नया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे चैनल का फायदा आपको मिल जाए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए